Hello everyone. Welcome to e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Jigyasha and today we will be discussing about most expected questions from the topic food and safety for the FSSI exam and State Food Safety Officer exam. So if you are preparing for FSSI assistant or FSSI Central Food Safety Officer or Technical Officer exam, you can enroll for these complete courses curated by Agriculture and GK platform, where you will get 6 to 7 ebooks which will cover your entire syllabus, and you will be provided with the YouTube class notes and one question bank, and you will get 10 full length mock tests with all India ranking as well, CBT 1 and 2 full notes, discussion group and personal guidance which will help you in your selection. So if you want to enroll for these courses, you can find the link in description box. You can go and enroll for these courses from there. Now moving to the today's video, here is our first question. What is the minimum temperature to which ground beef should be cooked to make sure it is free from harmful bacteria? 220 degree Fahrenheit, 140 degree Fahrenheit, 165 degree Fahrenheit और 160 Fahrenheit. सो बीफ को कुक करने के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए हमें? सो हमें चाहिए 160 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर टू मेक श्योर जो हमारा बीफ हम बना रहे हैं इट इज़ फ्री फ्रॉम हार्मफुल बैक्टीरिया. सो द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज 160 डिग्री फ़ारेनहाइट. नाउ मूविंग नेक्स्ट, which of the following is not a critical factor in the growth of dangerous foodborne bacteria? Temperature, time, moisture, altitude. सो यहाँ पे हमें ये बताना है कि हमारा जो फूडबोर्न बैक्टीरिया होती हैं उनकी ग्रोथ में कौन सा जो फैक्टर है वो रोल प्ले नहीं करता, मतलब कौन उसको फेवर नहीं करेगा, मतलब उनका कुछ रोल है ही नहीं उसकी ग्रोथ से रिलेटेड. तो हमें पता है टेम्परेचर जो है, क्योंकि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, कुछ को लो टेम्परेचर चाहिए होता है. तो जो टेम्परेचर है इट इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ डेंजरस फूडबोर्न बैक्टीरिया. सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. टाइम भी होता है कि कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पे फूड को छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो ग्रो करने लगते हैं. कुछ बैक्टीरियाज को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, कुछ को कम चाहिए होता है, तो टाइम भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. मॉइस्चर जो है ये तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ग्रोथ ऑफ डेंजरस फूडबोर्न बैक्टीरिया. सो जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच गया ऑल्टीट्यूड और हाइट, उसका कोई रोल नहीं होता इन द ग्रोथ ऑफ डेंजरस फूडबोर्न बैक्टीरिया. सो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ऑल्टीट्यूड इज नॉट ए क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ डेंजरस फूडबोर्न बैक्टीरिया. Now moving to the next question. How cold should your refrigerator be to minimize the risk of food poisoning? 35 degree Fahrenheit or colder, 40 degree Fahrenheit or colder, 45 degree Fahrenheit or colder, 50 degree Fahrenheit or colder. So हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फूड पॉइजनिंग? That is 40 degree Fahrenheit or colder. So our right answer will be option B. We need 40 degree Fahrenheit or colder temperature to minimize the risk of food poisoning during the storage of food in the refrigerator. Now moving next, which of the following bacteria are responsible for causing the greatest number of foodborne illness? E.coli, Salmonella, botulism, Listeria.
सो कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे ज़्यादा फूडबोर्न इलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो दैट इज आवर ऑप्शन बी, Salmonella. It is responsible for the greatest number of foodborne illnesses. So our right answer will be option B. Now next question is, which of the following is an acceptable technique for thawing a frozen turkey? In the refrigerator overnight, in the microwave, on the kitchen counter, submerging it in cold water overnight, leaving it in the garage overnight. So for thawing a frozen turkey, we leave it in refrigerator or overnight. So our answer will be option A. This is the technique we use for thawing a frozen turkey. We leave it in the refrigerator for overnight. Now moving next, bacteria multiply quickly in the food temperature danger zone. What is the temperature range for this zone? Between 30°F and 130°F, between 45°F and 145°F, between 40°F and 140°F, between 40°F and 150°F, between 50°F and 120°F. सो यहाँ हमें बताने है जो हमारी टेम्परेचर डेंजर जोन है वो कौन सी होती है, कितने टेम्परेचर पर। सो जो हमारा टेम्परेचर डेंजर जोन होता है वो होता है दैट इज़ बिटवीन 40°F एंड 140°F के बीच में। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, between 40°F and 140°F. Bacteria multiply quickly, and this is also known as the food temperature danger zone. So now moving next, when it comes to food safety, which of the following is the best material for a cutting board? Wood, plastic or acrylic, glass, velcro, or it doesn't matter. सो जो हमारा कटिंग बोर्ड है उसके लिए सबसे जो सेफ मटेरियल है वो कौन सा होता है? सो हमारा वो होता है प्लास्टिक और एक्राइलिक. फॉर कटिंग बोर्ड इट इज द बेस्ट एंड सेफ मटेरियल. Our right answer will be option B. Now moving next, when using chlorine bleach to sanitize cutting boards, how much bleach should be added to each gallon of water? 1 cup, 1 teaspoon, 1 tablespoon और 1 quart. सो जो कटिंग बोर्ड होता है हम उसे ब्लीच, जो क्लोरीन ब्लीच होता है उससे सैनिटाइज करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो उसमें जब हम जो हमारा गैलन होता है वाटर, हम जो वाटर ले रहे हैं उसमें कितना ब्लीच डालेंगे? सो हाउ मच ब्लीच शुड बी एडेड टू ईच गैलन ऑफ वाटर? सो 1 गैलन ऑफ वाटर में हम कितना ब्लीच ऐड करेंगे, क्लोरीन ब्लीच? सो हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून टू ईच गैलन ऑफ वाटर. सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. नाउ मूविंग नेक्स्ट, which of the following signs indicates that food has been contaminated by dangerous bacteria such as E.coli or Salmonella? Bad smell, discoloration, off taste, slimy surface, or none of the above? So
जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, जो फूड को कंटामिनेट कर देता है, that cannot be figured out by tasting the food or by its color, texture or the surface. So we can't figure it out by its smell, neither from the discoloration nor from the taste, not from the slimy surface as well. So हमारा आंसर हो जाएगा none of the above. Bacterial infection or bacterial contamination cannot be observed from the visual or olfactory senses. So our right answer will be option E. Now moving next. Which of the following groups of people have a higher than normal chance of contracting a case of food poisoning? Very young children, pregnant women, the elderly, persons with compromised immune systems, or all of the above. तो यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन लोग हैं जिनके फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट वूमेन, जो एल्डर पीपल हैं वो, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक है. सो यहाँ पे जो फूड पॉइजनिंग है दैट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड बाय any of these people. It can happen to young children as well, pregnant women also to the elderly people, and so for the people with good immune system and as well as a weaker immune system. So यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा all of the above. Now moving next. At what temperature should your refrigerator be maintained? 60 degree Fahrenheit, 45 degree Fahrenheit, 40 degree Fahrenheit, or none of the above. So the temperature 40 degree Fahrenheit should be maintained for our refrigerator. Our answer will be option C, 40 degree Fahrenheit. Now moving to the next question. In order to properly wash your hands before or after handling food, exactly what is the minimum amount of time you should wash your hands under running water? 10 seconds, 20 seconds, 1 minute, or none of the above. So before handling food, you should wash your hands at least for the minimum 20 seconds under the running water. So यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 20 seconds, that is option B. Our next question is, which of the following bacteria are responsible for causing the greatest number of foodborne illnesses? Salmonella, Campylobacter, E.coli, और none of the above. सो अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहाँ पे हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा फूड कंटामिनेशन या फिर फूड बोर्न डिजीज़ होती है वो कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो दैट वाज सैल्मोनेला. बट यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कैम्फाइलोबैक्टर, क्योंकि कैम्फाइलोबैक्टर है ये WHO के अकॉर्डिंग यहाँ मतलब जो कैम्फाइलोबैक्टर है इट कॉजेज 10 टाइम more cases of the bacterial foodborne illnesses. So यहाँ पर जब हमारे पास ऑप्शन में सैल्मोनेला और कैम्फाइलोबैक्टर दोनों होंगे तो वहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कैम्फाइलोबैक्टर, और जब कैम्फाइलोबैक्टर नहीं होता वहाँ पर हमारा जो सेकंड मोस्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है दैट इज सैल्मोनेला. तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैम्फाइलोबैक्टर. Now moving to the next question. Which is the minimum temperature at which hot foods on a buffet should be maintained?
212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट और नन ऑफ द अबव। सो जो हमारा फूड बुफे होता है उसमें जो हॉट फूड हम कहीं भी ऑर्डर करते हैं बाहर, तो वो कितने मिनिमम टेम्परेचर पर इट शुड बी मेंटेन, जो हमारा हॉट फूड है। सो इट शुड बी मेंटेन्ड एट 140 डिग्री, क्योंकि अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो फूड डेंजर टेम्परेचर डेंजर जोन होती है वो होती है 40 टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। सो मिनिमम जो है हमें, जब हम अपना फूड रेफ्रिजरेट करते हैं तो वो इसलिए हम 140 पर करते हैं कि या तो हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे करेंगे या फिर उससे और कोल्डर, ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो पाए और फूड में इन्फेक्शन की वजह से कोई डिजीज ना हो, क्योंकि अगर हमारा फूड कंटामिनेट हो जाएगा तो इट विल बी लीडिंग टू सेवरल डिजीज। सो और यहाँ पे जब हमारा हॉट फूड्स के लिए हम देखते हैं तो दैट इज शुड बी 140 और अबव 140, क्योंकि जो मोस्टली बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो करते हैं 40 टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंडर बिटवीन। सो यहाँ हमारा आंसर है वो हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। Now moving to the next question. The majority of foodborne illnesses are a result of which of the following? Improper handling of foods by the consumer, improper handling of foods in restaurants or food service settings, improper processing of foods by the manufacturer, or none of the above. So जो हमारी majority of foodborne illnesses हैं, these are result of. So these are mainly caused by improper handling of foods by the consumer. So यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। Now moving to the next question. When sanitizing dish cloths or cutting boards at home using chlorine bleach, how much bleach should be added per quart of water? So अभी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब हम गैलन्स में यूज़ कर रहे हैं वाटर को तो हम कितना यूज़ करेंगे, और यहाँ हमें ध्यान रखना, यहाँ पे हमें पूछा है पर क्वार्ट ऑफ वाटर। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, 1 टीस्पून, हाफ कप, हाफ क्वार्ट और नन ऑफ द अबव। सो वहाँ पे जो हम गैलन्स ऑफ वाटर के, फॉर ईच गैलन वी वर टेकिंग 1 tablespoon, and so for now per quart we will take 1 teaspoon of chlorine bleach. So our right answer will be option A. Now next question is, which of the following ways is not a safe way to defrost raw meat? In the refrigerator, on the counter, in the microwave, or none of the above? सो जो हमारा रॉ मीट होता है उसको डिफ्रोस्ट हम करते हैं, उसके लिए कौन सी जो मेथड है वे है वो सेफ नहीं है? सो वी नो कि हम हमारा जो रॉ मीट है उसको डिफ्रोस्ट कर सकते हैं इन रेफ्रिजरेटर और इन माइक्रोवेव, बट if we are doing it on the counter or on our kitchen shelf, it is not safe. It can lead to multiple disease causing microorganisms. So यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। Defrosting raw meat on the counter is not a safe way. Now moving next, what is the minimum temperature ground beef should be cooked to in order to assure safety? 155 degree Fahrenheit, 160 degree Fahrenheit, 165 degree Fahrenheit, or none of the above? So that is 160 degree Fahrenheit. Beef should be cooked
at least at minimum temperature of 160 degree Fahrenheit. The answer will be option B. Now moving next, which food is associated with the most cases of foodborne illness due to salmonellosis? Raw chicken, raw eggs, raw vegetables or none of the above? जो सैल्मोनेला बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा मतलब फूडबोर्न डिजीज जो कोज करता है वो सबसे ज़्यादा कौन से उसमें करता है, कौन सी फूड कैटेगरी में? चिकन में, एग्स में, वेजिटेबल्स में? तो वो है हमारा रो एग्स में. Most cases of foodborne illnesses due to salmonellosis are associated with raw eggs. So our right answer will be option B. Now moving next, if food looks okay and smells okay, it's safe to eat. True or false? अगर हमारा खाना मतलब दिख भी सही रहा है और when it smells good और okay, so क्या हम कह सकते हैं कि ये safe है? No, it is false. We have already discussed it कि जो हमारे बैक्टीरिया की वजह से जो फूड कंटामिनेशन होती है वो हम सेंसरी और ओल्फैक्टरी जो है टेस्ट उनके थ्रू नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. So that will be wrong. False. Now moving next, eating food after the best before date won't hurt. True or false? So if we eat any food after its best before date, so will it lead to some disease or what? So बेस्ट बिफोर डेट मीन्स कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन मिनरल्स जो भी हमें उस पर्टिकुलर फूड से मिल रहा है वो कम हो जाएंगे. सो बेस्ट बिफोर का मतलब वही होता है कि हम अगर उससे पहले कंज्यूम करते हैं तो वो मतलब जो उनके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी हैं वो हमें जो वहाँ पे मतलब मेंशन्ड है उसी प्रॉपर अमाउंट में वी कैन इनटेक इट. बट अगर हम उसको बेस्ट बिफोर डेट के बाद खाते हैं तो उसके सिर्फ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है उनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, वो लॉस हो जाता है. बाकी इट विल बी सेफ टू ईट फूड. द फूड विच हैज़ मैंशन एक्सपायर्स बाय. सो जो फूड एक्सपायर हो रहा है उस डेट के बाद हम नहीं खा सकते, बट कुछ फूड्स होते हैं जहाँ पे मैंशन होता है बेस्ट बिफोर, सो वी कैन ईट दैट फूड आफ्टर द बेस्ट बिफोर डेट. So that will be option A, true. Now moving next, use by dates are there to make you buy more. True or false? So that is a very common saying कि sometimes हमारे घर में भी लोग बोल देते हैं कि ये तो ऐसे ही ना लोग यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इस डेट से पहले यूज़ करो ताकि लोग इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे एंड दे विल बाय मोर. सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो इट इज़ फॉल्स. यूज बाय डेट का काम ये नहीं होता टू मेक यू बाय मोर. यूज बाय डेट्स आर मेंशन क्योंकि कुछ फूड्स होते हैं वो हाईली पेरिशेबल होते हैं. सो इसीलिए यूज बाय डेट्स होता है कि आपको उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 days की है तो यूज बाय सो दिस एंड दिस डे. सो इसीलिए वहाँ पर वो होता है कि अगर उनकी शेल्फ लाइफ ही कम है आप उसके बाद उनको कंज्यूम कर रहे हो तो हो सकता है वो कंटामिनेट हो चुका हो एंड दैट कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग और एनी अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स. नाउ मूविंग नेक्स्ट, स्टिक टू द 5 second रूल एंड यू विल बी ओके. ट्रू और फॉल्स? सो बेसिकली हम ये नहीं बोलते कि अगर कुछ खा रहे हो आप, आपके हाथ से गिर गया और जैसे कि 5 second रूल, अगर 5 second से पहले आपने उठा के खा लिया तो इट्स सेफ. सो इज इट ट्रू और नॉट? सो इट इज फॉल्स. अगर वो फूड नीचे गिर गया है ग्राउंड पे तो हो सकता है ग्राउंड पे ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरियाज हों, तो ऐसा नहीं होता कि आपने 5 second में उसे उठा लिया है तो वहाँ पे वो इन्फेक्ट नहीं करेंगे. दे कैन. सो दिस इज फॉल्स. नाउ मूविंग नेक्स्ट, प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स आर मोर हाइजीनिक देन वुडन वंस. ट्रू और फॉल्स?
सो दैट विल बी फॉल्स, क्योंकि सैनिटाइजिंग करना प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स को दैट इज कंपैरेटिवली इजियर, बट प्लास्टिक चॉपिंग बोर्ड्स पर कई बार होता है कट लग जाते हैं और वहाँ पर मतलब बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू कर सकते हैं, जबकि वुडन वंस पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम वुडन चॉपिंग बोर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर मतलब कोई कट वट का नहीं होता कि यहाँ पे कट लग गया तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रोथ शुरू कर देंगे। सो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। So, if you are preparing for TNMRB Food Safety Officer exam, you can enroll for this complete course where you will get full study material that carries 6 ebooks and 1 question bank. You will also get a test series which is based on exam pattern with all Tamil Nadu ranking, YouTube class notes, previous year paper, and all the quality content only at 999 rupees. So you can get all this in only in 1000 rupees. So either you can find the link in description box or you can download that from Play Store and enroll from there as well. So now moving to the next question. You don't need to wash raw chicken before you cook it. True or false? That is true. We don't need to wash raw chicken before we cook it. Now the next question is, if you have got a dodgy stomach, it usually from the last thing you ate. That is false. क्योंकि sometimes जो होता है कि आपने शायद एक दिन पहले कुछ खाया हो तो वहाँ पे मतलब वो धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू कर रहा हो, मतलब जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्ट धीरे धीरे करना शुरू कर रहा हो और आपको मतलब वो कुछ टाइम बाद फील हो। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने जो लास्ट टाइम खाया था उसी की वजह से आपको जो आपका स्टमक है दैट इज अपसेट और डोजी। सो दैट इज फॉल्स। नाउ मूविंग नेक्स्ट, मोस्ट फूड पॉइजनिंग इज फ्रॉम डोजी रेस्टोरेंट्स एंड टेक अवेज। ट्रू और फॉल्स? That is also false. Next is, food poisoning isn't serious, it just means an upset stomach. True or false? That will also be false, क्योंकि food poisoning can lead to serious disease as well. So that is false. It's just not only upset stomach. Streaks occur as long as the outside is browned. True or false? जो हमारी स्टीक होती है अगर वो बाहर से ब्राउन है तो इज इट ओके? Yes. So as long as our steak is brown from the outside, it is okay. True. It is best to serve burger pinks in the middle. That is false. Moving next, cooked rice cannot be kept as long as other leftovers. True or false? So that is true. क्योंकि rice is a highly perishable food. So food contaminate हो जाएगा if we keep it for long. So यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Now moving to the next question. Hands should be washed with water and soap for at least 5 seconds, 20 seconds, 15 seconds or 10 seconds. That is 20 seconds. Our answer will be option B. Now moving to the next question. Is it safe to put cooked food on a plate that held raw meat, poultry or seafood? Yes or no? So no, it is not safe to put cooked food on a plate that held raw meat, poultry or seafood. So our answer will be option B. No, it's not safe. Now moving next. Food should not be left at room temperature for more than 2 hours, 10 hours, 5 hours, 6 hours. So the food should not be left at room temperature for more than 2 hours.
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Now the next question is, you cannot get food poisoning if you thoroughly cook your food and eat it promptly. That is false. क्योंकि कुछ जो बैक्टीरिया है वो इवन जो हमारा कुकिंग टेम्परेचर है उस पर भी सर्वाइव कर सकते हैं. सो दे माइट नॉट गेट किल्ड ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस and they can lead to food poisoning. So it is false. Now the next question is, which of the following long-term complications can result from food poisoning? Rheumatoid arthritis, kidney disease, nerve damage, or all of the above? So that is all of the above. All of these disease or long-term complications, we can say, can result from food poisoning. So food poisoning is not just upset stomach, it can lead to several long-term complications. Now the next question is, the first symptoms of food poisoning can occur immediately, within 2 to 48 hours after eating, from 2 days to a week after eating, or any of the above. So अभी we just discussed it in our true false question कि कभी कभी ना मतलब कुछ जो बैक्टीरियाज होते हैं they take time. So और कुछ जो होते हैं कुछ बैक्टीरियाज they lead to infection immediately, some takes time. So यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा any of the above. So the symptoms can occur immediately as well as within 2 to 40 hours, 8 hours of eating, as well as from 2 days to a week after eating. So our right answer will be any of the above. Now moving to the next question, you should contact a doctor for possible food poisoning if you experience bloody diarrhea or pus in the stool, headache, stiff neck and fever, diarrhea that hasn't let up after 3 days, weakness, numbness or tingling, usually in the arms or legs, but sometimes around the mouth, or any of the above. So all these are the possible symptoms of food poisoning. So you should consult a doctor if you face any of these symptoms. So our right answer will be option E. Now moving to the next question, which of these groups has a greater risk of getting food poisoning than the others? Smokers, heavy antacid users, people who drink alcohol at least once a week, they all have an equally high risk. So the people with heavy antacid have a greater risk of getting food poisoning than others. So our answer will be option B, heavy antacid users. Now moving next, how many Salmonella bacteria does it take to give you food poisoning? As few as half of a dozen, at least 1000, at least 1 million, or none of the above. So for food poisoning, कितने Salmonella bacteria जो है वो required होते हैं? So it is as few as half a dozen. So even the smallest number of Salmonella bacteria can give you food poisoning. So our answer will be option A. Now moving next, which has been linked to outbreaks of food poisoning caused by E. coli O157H7, apple juice, ground beef, lettuce, or all of the above? So it is apple juice, ground beef, or lettuce. All these three has been linked to outbreaks of food poisoning caused by E. coli O157H7. So our answer will be all of the above. Option D is the right answer. Now moving next, more than 10% of all bottled water starts out as tap water. True or false?
So that is true. Now moving next. An EPA approved water filter meets minimum standards set by the Environmental Protection Agency for removing bacteria and other harmful substances. True or false? That is false. So our answer will be option B. Now moving next. To avoid food poisoning from E. coli O157H7, cook ground beef until the internal temperature reaches 160 Fahrenheit, the juices run clear, no more pink color is evident. So abhi we just discussed कि beef, apple juice or lettuce are linked with food poisoning caused by E. coli O157H7. So उसको अवॉइड करने के लिए बीफ को कितने टेम्परेचर पर हमें कुक करना चाहिए, कितने टेम्परेचर पे, या फिर जब तक जूसेस जो है वो दे स्टार्ट रनिंग क्लियर और नो मोर पिंक कलर इज एविडेंट. So it will be until the internal temperature reaches 160 Fahrenheit. We discussed it in a previous question as well कि बीफ को है वो हम कुक करते हैं until the internal temperature reaches 160 Fahrenheit. वो इसीलिए करते हैं to avoid food poisoning from E. coli O157H7. So our answer will be option A. Now moving next. When you cook meat or poultry or casseroles that contain meat or poultry, what minimum oven temperature should you use? 125 Fahrenheit, 225 Fahrenheit, 325 Fahrenheit और 425 Fahrenheit. So oven का temperature कितना होना चाहिए when you are cooking meat or poultry? It should be 325 Fahrenheit. So our answer will be option C. Now moving to the next question. What is an easy way to reduce the amount of potentially cancer-causing heterocycline amines or HCAs that form when chicken is broiled or grilled? Keep the chicken refrigerated until just before cooking. Remove the skin after the chicken is cooked. Remove the skin before the chicken is cooked. Before broiling or grilling the chicken, pre-cook it in a microwave for a few minutes and pour off the juices. So that is before broiling or grilling the chicken, pre-cook it in a microwave for a few minutes and pour off the juices. So that is the easiest way to reduce the amount of cancer causing heterocyclic amines. So our answer will be option D. Now moving next. 80% of all food poisoning from meat and poultry is caused by E. coli O157H7, Salmonella, Campylobacter, Staphylococcus clostridium. So that is E. coli O157H7. 80% of all the food poisoning from meat and poultry is caused by E. coli. And in general, it is caused by Salmonella and Campylobacter. And Campylobacter is the greatest disease causing bacteria or the food poisoning. So for the meat and poultry, it is E. coli O157H7. So that is option A. Now moving next.
Prions are the agents that appear to cause a deadly disease in people who eat meat from cattle with mad cow disease. Which cooking method for beef destroys prions? Cooking until the internal temperature reaches 180 degrees Fahrenheit. Broiling for at least 15 minutes. Pre-cooking in a microwave for 3 minutes and pouring off the juices before broiling or grilling. Cooking until no pink color remains and the juices run clear. Or none of the above. So it will be none of the above. We have discussed it. We need to cook until the internal temperature reaches 160 degree Fahrenheit. So यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा none of the above. Now the next question is, it is safe to eat rare hamburgers if the ground beef has been irradiated. True or false? So that will be false क्योंकि irradiated food is not safe for human consumption. Now moving to the last question of today's video. How can you tell if an egg is contaminated with Salmonella? The shell is cracked, the shell has dried chicken feces on it, the egg hasn't been kept refrigerated, or you cannot tell. So we have discussed this as well कि जो हमारा Salmonella है, that is a bacteria, and the infection caused by bacteria cannot be identified by visual or olfactory senses. So by checking the shell or seeing if it is not kept refrigerated, we cannot find if it is contaminated by Salmonella. So a right answer will be you cannot tell. Option D is the right answer. So that is the answer key. And here is a detail of all the complete courses and test series available at Agriculture and GK platform. IBPS AFO, UK SSSC AAO, HPPSC ADO, NABARD exam, JK SSSB Horticulture Technician, UPSC AAO, OPSC AHO, OPSC Assistant Agriculture Engineer, UPPSC Assistant Engineer Agriculture, ICR JRF, ASRB NET, ICR NET, Fisheries exams, Forestry exams, FSSI exam, Tripura FSO, TNMRB FSO, TNPSC AO, AAO, DSSB SO Horticulture, FCI AGM, Cotton Corporation of India exam. So you can find all these courses at Agriculture and GK. You can download the app and you can also check the website agriculturegk.in. For free resources, you can subscribe to the YouTube channel, or you can join the Telegram channel as well, or you can follow us on Instagram for all the updates regarding all the exams based on agriculture and allied sectors. So that was all for today. Thank you for watching this video.